And what a hit! 6 over long off. You can see in the replay, clean strike. Adnan looks well settled and now he's looking to accelerate. The ball was a juicy full toss outside off stump. He made full use of it. This time another fuller delivery, but straight to the fielder, misfield, and 1 run added. So the intent that I was talking about, we've seen the shift in momentum by the Denim Craft batters. 91 for 5. Fifth ball of the over, and this time over mid-wicket, and it's another 6. Second 6 of the over. And as I said, the batters will look in a change of momentum, the switching gears, and this time around it was OMAR, the batter. OMAR Masood picking up on the new bowler, not giving him any chance to settle in. 14 runs of the over so far. Last ball of the over, slower delivery. The batter was hoping that the umpire gives it a wide ball, but the bowler got away with that. So 97 for 5 after 14 overs. And the launch pad that I was talking about, that if Denim Craft are able to score around 100 runs in 15 overs with wickets in hand, they can still achieve 150 plus. It can be a decent total. Keeping the heat in mind, it's very hot out there. Not easy to field or bowl in such conditions, but the wicket seems to be a batting paradise. Bowling change. Tanveer Hussain will now bowl in from the pavilion end. So Denim Craft, who started not so well, but they're in a reconstruction now. The first ball of the over, down the leg, wide ball, signaled by the umpire. 98 for 5 now. We're into the 15th over of the game. Simon Fuller delivery. And what a hit! The umpire showed his reflexes to save himself. 4 runs added to the total. So we've seen a change in momentum. Boundaries are suddenly coming for Denim Craft. And this partnership is being very helpful for Denim Craft. Now this time another hit, and 6 more runs added to the total. We saw 2 boundaries in the last over, 2 boundaries from this over so far. 11 runs of 2 balls, and Denim Craft are on song. They were batting at the run rate of 6. Around the 10 over mark, and this time again middle and straight to the long off fielder. A very well judged catch. Not easy to catch these. Farooq Rizvi was the fielder. The ball was middle 6 inches towards the right or left. It would have been a certain boundary, but very well judged by the fielder. Farooq Rizvi took it in reverse cup style, very well judged, and certainly Denim Craft, who were looking really good, started to middle the ball. Have lost a wicket at a very crucial period.
Adnan gone for 37. He faced 31 deliveries, hit 2 sixes and 1 4. Asif Sheikh is the new batter. 3 balls remaining in the 15th over. 108 for 6. A timely wicket for IMI OMAR because Adnan started to look dangerous, started to middle the ball. He was striking the ball cleanly. He picked up 10 runs of the first 2 balls and a wide. Now, another chance for IMI OMAR to break the momentum of Denim Craft. The 4th ball of the 15th over. This time, quicker delivery. The batsman was quick on his feet, added 1 more run to the total towards the long off region. 109 for 6 now. Omar Masood, the batter on strike. Seems like the bowler missed his stepping. So he going to bowl that again. Quicker delivery outside off stump and between the gap. 1 run added to the total towards the deep cover region. 110 now, Denim Craft. 1 ball remaining in the 15th over. Time uses feet again and can be a catch, but over the head of the long off fielder. A mix over where we saw a wicket and we saw boundaries, but in the end, a very eventful over for the batting team. 19 runs off the over. And certainly, where we're talking about Denim crossing the 150 mark, certainly they've started to believe that they can cross 170 now. So that's what T20 cricket is all about. Change in momentum, change in game. They were 67 for 5 in 10 overs. They've managed to score around 50 runs in the last 5 overs. In particularly the last 2 overs have been the change in gears. So first ball of the 16th over, played across the spin towards the deep mid wicket region. 1 run added to the total. Javed Mansoor, who gave away 14 runs in his first over, bowling the second over for the day. This time another juicy full toss. The new batter, Asif Sheikh, couldn't find the gap, hit it straight to the deep cover region. 1 run added to the total, 118 for 6. Third ball of the 16th over. This time another full toss, a low full toss, but no harm done. The batter managed to hit it straight to the deep mid-wicket fielder. 1 run added to the total, 119 for 6 now. 3 balls remaining in the 16th over. 3 runs so far of this over. The bowler needs to finish well. This time, shorter delivery, no run added to the total. So, a good comeback by the IMI OMAR team. After 2 expensive overs, they've given away only 3 runs in the 16th over so far. 2 balls remaining. Asif Sheikh will be looking for a boundary this time. Makes room, connects, but is it good enough? Not good enough. 2 runs added to the total. For a moment, it seemed like he'll get a boundary, but
That's the longest boundary from this end. Mid-wicket region is the longest boundary. 2 runs added. So 5 runs of 5 balls so far. 121 for 6. Denim Craft. This time a quicker delivery outside off stump. The keeper is appealing, but no response. The batter is asking for a wide delivery. He's pleading for it, but no response from the umpire. So end of over, only 5 runs of the over. A good over for the bowling team. So 4 overs remaining, 121 for 6. 121. 16 ओवर. मेरी कमेंट्री से किधर जा रही है? ग्राउंड में नहीं जा रही? ग्राउंड में जा रही है, लेकिन 21 ओके ठीक. बाकी यहाँ सब जगह जा रही है आपके पास. ऑडियंस बैठी है ना, ऑडियंस तक सब जगह जा रही है. Last 4 overs of the first innings, Denim Craft in a very decent position, keeping in mind they lost their 4 wickets for just 34 runs in the power play. Good fight back, but they need to finish well. There's a change in bowling. Aftab Hamid. Will bowl his second spell of the day. His last over is given away 25 runs so far in his 3 overs. Picked up 1 wicket. He dismissed Ahmed Zishan for a duck. First ball of the 17th over. And clean strike, but equally fielded well by Farooq. He's having a good day in the field. First a brilliant catch and then saving 2 definite runs for his team. 2 runs added to the total. Umar on strike. Umar Masood batting on 19 so far. Aftab Hamid running in this time. The ball was towards the leg stump and connected well. Finally, he'll get a boundary. 4 runs added to the total. Important time to get boundaries for Denim Craft. They must be eyeing anything above 160, and boundaries will help. So 5 runs of the first 2 balls so far. Aftab Hamid running in for the third delivery. This time shorter delivery, but the batter only managed to get 1 run. Fielded well by the cover fielder. So 6 runs of the first 3 balls. Denim Craft would like to get at least 1 more boundary in the remaining 3 balls. 4th ball of the over this time. Good length delivery. Strike towards the wider long off region. Enough time for the batters to get 2 more runs. So 127 for 6. Then 129 now with those 2 runs added. 8 runs from the first 4 balls so far. A boundary can add. And there is a chance the ball is in the air.
And he timed it good enough to get 6 runs. That was an effortless hit. When the ball came off the bat, seemed like it will carry to the fielder, but it was middled good enough to get 6 runs. So 14 runs of the over so far with 1 ball remaining. And Denim Craft 135 for 6 with 19 balls remaining. Certainly, it seems like 170 is manageable. Last ball of the 70th over, short ball and beautifully striked. 6 more runs added to the total. Big, big over for Denim Craft. Effortless batting by Omar Masood. The partnership is turning it around for Denim Craft. 33 runs of 15 balls. 2 consecutive sixes of the last 2 balls. 20 runs of the 17th over. And certainly Denim Craft are back in the game. 141 for 6. Omar Masood batting on 33 of 19. The earlier batting team and batsmen from Denim Craft were struggling. It seemed like they were batting on a complete different track. But since Omar Masood has walked in, he's showing that the track is very good for batting. He's proved it with his clean striking. And now 175 seems very manageable. 5 overs ago, it seemed like 150 would be a good total. And now first ball of the 18th over, no run added to the total. So that's what T20 cricket is all about. 2-3 good overs for the batting team, and certainly the momentum changes. 141 for 6 now. Great fight back by Denim Craft. This time straight wicket to wicket bowling by the bowler. Javed Mansoor bowling his 3rd over. This time he middles it, but straight to the fielder. Farooq Rizvi, I think he has a magnet in his hand. Wherever he's going, the ball is following him. Second catch of the day. He took a brilliant catch earlier, long off position, and now another catch. So 7th wicket down for Denim Craft. And Javed Mansoor have made a great comeback. He gave 14 runs in his first over, and since then he's given away only 5 runs and picked up 2 wickets in previous 9 deliveries. Mohammad Ali, the new batter. Denim Craft 7 down now. One run added to the total. 142 for 7 now. 2 balls remaining in the 18th over. Omar on strike. Can he get another boundary for his team? Batting on 33 of 19 so far.
This time, 1 run added. Ball was guided towards the short fine leg region. 143 for 7. 13 balls remaining. First innings. One more run added. 144. 144 for 7 after 18 overs. Only 3 runs of the previous over. Really well bowled. What can Denim Craft manage from here? 12 balls remaining, 3 wickets in hand. They have Omar Masood on the crease, striking the ball well. In the end overs, even the tail-enders can hit the ball big. Atif Maqbool, he'll change ends. He was bowling from the club road end and now will bowl from pavilion end as a left-handed batter is on the crease. There's a long boundary for the left-hander towards the leg side. First ball of the 19th over, outside off stump and chance for a catch and easily taken. Cotton bowled, Ali is the batter. This makes for just 2 runs. He had no other option than to look for boundaries. Atif Maqbool, using all his experience, bowled it short and outside off stump. Fahim Bukhari is the new batter. But more importantly, Omar is on strike for Denim Craft. 11 balls remaining. And it seems like they haven't crossed. So the new batter will face. Yeah, so Omar Masood will face. They have crossed. Second ball of the second last over. This time, he middled it well again, but over the fielder, another 6 for Omar Masood. He's batting on a complete different level today. 40 runs now of 21 balls. What a hit. Made room on the back foot. Milled it so well. For a moment, it seemed like the mid-wicket fielder is in for a chance, but it was over his head. Another 6. For Omar Masood. He has managed to hit 4 sixes so far in his innings. No boundaries. He's dealing in 6s only. Batting at a strike rate of 190. Atif Maqbool been very economical so far. He'd given away only 12 runs before this boundary. And certainly, the momentum is back towards the Denim Craft. Next ball this time outside off stump. And a guy towards the deep mid-wicket region. 1 run added to the total. 151 now Denim Craft. They've crossed that 150 mark. The bowlers have something to bowl at.
We have to see how much more can they manage in the last 9 balls. This time, ball pitched in the middle stump. Strike towards the deep mid-wicket region. 1 run added to the total, 152 for 8. 8 balls remaining and Omar Masood is on strike again. He's managed to hit 4 sixes so far. Can he get number 5? Cleanly striked. No chance for the fielder. First boundary for Omar Masood. He was dealing in sixes before, but a boundary will help. So good over, nonetheless. First ball, Atif got a wicket, and since then it has favored the bowling team. 12 runs of the previous 4 balls. Last ball of the over. You wanted to make room, couldn't connect, but 1 run added. So Omar will be on strike for the last over. 157, 13 runs of the 19th over. Omar Masood batting on 46 of just 24 balls. If turned it around for Denim Craft. After the power play, when Denim Craft was struggling at 34 for 4, it seemed like 130 would be difficult, but looking at the scorecard now, Denim Craft will rather take it. The 170 is still in reach. It would be a very decent total, especially after losing 4 wickets within the power play. First ball of the last over. Time, no run added to total. He wanted to hit it towards the leg side. Completely missed the line of the ball. Javed Mansoor will be bowling his 4th over. He's made a very good comeback, especially after giving away 14 runs in his first over. Second ball of the last over. This time, beautifully bowled. Typical leg spin delivery, pitched on middle leg, got a sharp turn, and the batter had no clue. So 2 dot balls in the last over, crucial 2 dot balls. This time a fuller delivery, the batter made room, and I wonder how he has managed to get out on that delivery. The ball was way outside off stump. And he did very well to drag the ball towards the stump. If he would have just left the ball, it would have been called a wide. It was way outside off stump, and he middled it straight into the stumps. But what an innings by Omar Masood. Very well batted for his 46. Has given hope to his team. 46 of 27, 4 sixes and 1 boundary. But equally well bowled by Javed Mansoor. Has managed 3 dot balls in the last over so far. And what a way to welcome. Azizullah came into bat, number 10, hits his first ball for 6. But the ball was quite short, pitch short. It was inviting the batter to hit it, and he did not miss the opportunity.
So fifth ball, this time low full toss outside off stump. 1 run added to total, but still 7 runs of 5 balls. Last over of the innings. The bowler just needs to bowl a good delivery in the last one. A juicy full toss. No ball called by the umpire. 2 run. No, the batsman slipped, and it's no ball and a free hit. So, an idealistic situation, a free hit on the last ball of the innings, 166 Denim Craft. Shorter delivery, but couldn't do much damage. The batsman will try to get 2 runs. 168 for 8 Denim Craft. They'll take it any day after losing 4 wickets for 34 runs. A decent total, 168. The target is 169. And we'll join you back shortly after the inning break. Mirza Qamar Beg will join you in the start of the second innings. We'll be back. वो पेपर से आप मुझे दे दीजिएगा, ये चार्ज पे लगा, बंद होने वाला है इंटरनेट, चार्ज पे नहीं आ रही, ये तो अच्छा हुआ ना, बैट्समैन डिस्टर्ब होता है यार, उसे पता ही नहीं कमेंटेटर रोल मेरे वाला, ये तो आवाज नहीं करती, ये अच्छा ही नहीं, बैट्समैन डिस्टर्ब बाद अब यार भाई तो है नहीं, जो बार-बार डांटे यार, देखते हैं वो यूं करते हैं आप लोगों के तो लगे होंगे बहुत डब्बा ले नीचे वाले आगे दूसरा डब्बा से निकालिए। उम्र में कितना किया कमेंट्री बंद थी, कमेंट्री बंद थी, ये राशिद आ रहा है, आवाज बाहर नहीं आ रही, माइक बंद होगा मेरा ख्याल, हो सकता है आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, काफी देर से आ रही है, तो बताना नहीं, काफी देर से कह रहे, काफी देर से आवाज नहीं आ रही, तो माइक बंद कर लीजिए, कमेंट्री 1 मिनट हो गया, कमेंट्री का आवाज बढ़ा आसिम भाई, मैच फिक्स हो गया, हमें पता ही नहीं है क्या क्या, आप तो नहीं देख रहे, हमें पता ही नहीं है मैच कितने में फिक्स हुआ है, आप देख तो लिया था, देख तो लिया था आपने, हाँ तो जाम भाई बताएंगे खुद कितने में फिक्स हुआ है, शेयरिंग में आप जो है ना 1 बजे रतन भाई का मिल गया ना, मिला आपको मेरे ख्याल है, या तो माइक नहीं वो नहीं देख के गाड़ी में नेक्स्ट टाइम दे दीजिए, कल अभी दे दो गाड़ी में बॉल, उम्र में कितना किया है
कितने थे उमर? एक सेकंड। उमर मसूद ने ना, उमर मसूद ने 46 रन किए 27 गेंदों, एक चौका, 4 छक्के। पुरानी बॉल देंगे, पुरानी बॉल देंगे। वो लड़का है
माइक ऑन करना पड़ेगा, और अभी बंद कर देते हैं अभी। यहाँ से ये भी लाइव चेक करते हैं, आवाज़ आ रही है। हेलो 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 आ रही है। हेलो हेलो। ये लाइव लाइव आ रहा है ये वाला, लेकिन इसका यहाँ ऑन करना, ये अभी अब ऑन किया हुआ है। This is the fourth match. चौथा मैच। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good afternoon from a warm, sunny day here at the Karachi Gymkhana. And this is the fourth match in the 35th Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival being played at the Karachi Gymkhana ground. And we haven't had this festival. This festival was discontinued for 2 years due to the pandemic which devastated this world. And it's nice to see cricket being played here in Ramzan after this 2 years interruption. And this is the fourth match, and this is the fourth match for the OMAR Associates 35th Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival 2022. I still remember when the first one was played right here at this ground. The addition we have here now is that we have a proper international standard track around the ground. And this is the match between IMI OMAR and Denim Craft. And who batted? Denim Craft in the toss and field keep first. Denim Craft won the toss and elected to field, and IMI OMAR batted and they scored. Sorry, Denim Craft batting scored. Denim Craft. Denim Craft. Denim Craft 168 for 9. And Denim Craft have scored 168 for the loss of 9 wickets. Losing the toss. And they lost the toss. And they were put into bat. Put into bat. Who's it? And then scorecard. This is scorecard. Sagar, Ara Sagar. One main, one. नीचे और है मेन ये है बंदा मसूद है कोई Pakistan International Ghulam Ali scored 26 runs of 22 deliveries. And we also have the pleasure of having former Pakistan wicketkeeper and captain Moin Khan, who was part of the winning 92 World Cup team, which won the World Cup under the dynamic leadership of Imran Khan. Okay. And the two batsmen are out there, IMI OMAR batsmen, Irfan Mushtaq and Hazrat Amin. And we are going to start from the governor's house end, and it is going to be Asif Sheikh. My word, he had an almighty swipe at that one, failed to make contact, collected by the keeper, no runs, no damage done. They have to score at the rate of OMAR have to score at the rate of 8.4 runs per over to win this match. And there's a change in the field. Long Medan has come to long off, and square leg is in the circle, and this time and missed by the field
the ball racing to the point boundary, and the umpire signals for. And we have umpires Rashid Khan and Muhammad Rehan, and they are in a very bright yellow color, and they stand out from the players. We have the IMI OMAR batsman in a lovely Pakistan green, while the Denim Craft is in a deep blue. And this is the third ball, 4 runs. Here he comes. This one has been hooked to backward square leg, 4 runs. Umpire signals 4. And umpire Rashid Khan signals the 4, takes the score on to 8. 8 for no loss. It's a warm day outside. There's a slight breeze blowing across the ground. And since this tournament started 35, 37 years ago, there's been a lot of changes here. We have high-rise buildings coming all across the ground towards the club road. And here we go. This one is, oh my word, almost no man's land. There were 3 fielders converging of it, and the ball, and Hazrat Amin trying to emulate, I'm sure his batting style is the same as that of Hazrat Zazai of Afghanistan. He's trying to emulate that. Let's see if he's successful. And, this time, lovely shot there, going down the wicket to the pitch of that one. And this one races to the cover boundary. 4 runs. That takes the score to 12. It's a and Sheikh. And this one, wow, that was a great T20 shot there. He came ball, as soon as the bowler Asif Sheikh saw him coming down the wicket, he did try to bowl a wide, but the batsman got to the pitch of that one, and a blistering drive, blistering cover drive, 4 runs, and that is the end of the over. And 17 runs was scored in this over. एक ओवर के इख्तिताम पे 17 रन बने हैं भाई, लगा दें। यार ये यहाँ आए और ये लाइव जा रहा है, ये सही जा रहा है, ये ओके ओके नो प्रॉब्लम, सही है। Okay, okay. And this is the second over, which is going to be bowled from the club road end by Fahim Bukhari now. Left arm spinner, left arm orthodox spinner, and the field is being set, and we have 2 people outside, 2 fielders outside the circle, one at long on and the other at almost a wide square leg. So, here he comes. And this one been smashed to square leg, but for a single, and that takes the score on to 18.
second over being bowled, and this is Fahim from the club road end, and he is going to be bowling to no. And this one, no runs. Oh. 18 for no loss. We now have a pretty high-tech pavilion with all kinds of gadgets, computers, a good professional setup, and a great drive straight down the ground, 4 runs to long off, and great, very good shot there by 22 for no loss, and three balls have been bowled, and that's and this one again, Hazrat Amin trying to dispatch the ball outside the ground, failed to make contact, collected by the keeper, no runs, no damage done. And Fahim to Hazrat Amin again, this time he almighty swipe. Let's see, yes, umpire signaling leg by. So that takes the score on to 23. 23 for no loss. And it's going to be Fahim, left arm orthodox spinner. And he will be bowling to Irfan Mushtaq. And Irfan Mushtaq whipped it to mid-wicket, a single. And 2 ओवरों के अख्तिताम पे 24 रन हुए हैं. Good 2 overs by the IMI OMAR batsmen. They are way ahead of the required run rate, which is about 8.43. Let's see what Denim Craft can do to slow down this onslaught from the IMI OMAR batsman. There's a bowling change from the governor's house, and then Muhammad Ali has come on in place of and field being set, and this is the 3rd over, and the first 6 overs are where you are allowed you're allowed only 2 fielders outside the circle, and let us see. Muhammad Ali is also a left-arm spinner, and he is going to be bowling to Irfan Mushtaq, and both these batsmen are out there. They only know one shot, and that is to get the ball out of the ground. Here it comes, and my word, this goes towards mid-wicket. Let's wait for the umpire signals 6 to mid-wicket. Great shot there by Irfan. Muhammad Ali getting clobbered to the square leg boundary. 6 runs, and here he comes, Muhammad Ali to Irfan. And this time again, let's see if the fielder can get to it. Oh no, this was a difficult, because he was running away from towards the ball, and Irfan gets a single. Muhammad Ali will now bowl to Hazrat, and the score is 31 for no loss, and this is the 3rd over being bowled, and here he comes. Oh my word. Hazrat tried to cut that ball, almighty swipe, failed to make contact, collected by the keeper, and Muhammad Ali to Hazrat. Let's see. These 2 batsmen are
This one pitched outside the leg stump, and Hazrat hit on the pad. No question of any appeal, and no runs. The ball trickled to the point, gully field, deep gully fielder on the circle. No runs, and Muhammad Ali to Hazrat. In he comes. He's got an ambling walk up. This turn again was pitched. Let us see. And that he's got. Caught at square leg on the fence by Fahim Bukhari. That is the end of Hazrat, and he scored 12 runs, 8 balls, 9 balls, 12 runs. he scored 12 runs with the help of 3 fours, and he scored them off 8 deliveries. 9 deliveries. 150 striking rate, And his strike rate was 115. 0. 150, and now the next batsman coming in, Irfan Ali. Irfan Ali comes in, and he replaces Hazrat Amin. Okay. And it's going to be Muhammad Ali to Irfan Ali. How many balls are left? It's 31 for 1 now. 8 ball ready. And this probably is the last delivery of this over by Muhammad Ali. He's been successful in making a breakthrough. He's got the first wicket of IMI OMAR. And Irfan Mushtaq is facing, and again the same action, trying to get him out of the ground towards mid-wicket, and failed to make contact, collected by the keeper, and that is the end of the third over by Muhammad Ali. And at the end of 3 overs, 31 रन हुए 3 ओवरों के इख्तिताम पे. So it's going to be, let's see who continues. Fahim Bukhari left from Fahim Bukhari continues from the club road end, and field being adjusted, and we have, it's going to be, Irfan is going to be facing him. Here he comes, Fahim Bukhari. This one is cut, he pierced the field, bisected the 2 fielders at point and backward at gully. 4 runs, all along the ground, the ball racing to the boundary. Great shot there. It did a treat to watch that shot. And 4 runs, and that takes the score on to 35 for the loss of 1 wicket. And Fahim Bukhari. This one straying down the leg side, and it got the punishment it deserves. Backward point, 4 runs, all the way. A wide fine leg also, you may call it. So that takes the score on to 39 for the loss of 1 wicket. It's going to prove to be an expensive over, as this was the second ball, and it's already 8 runs in this over. And now he is... Fahim is adjusting his field. He's got this fielder on the ground, backward point, on the fence. And here he comes. Bowls, and this one forward defensive, and giving him some respect. That takes the score on to 40. 40 for the loss of 1 wicket, and this is the 4th over being bowled. And he's going to be bowling now to Irfan Ali. Irfan Mushtaq, and my word, an almighty 6 to mid-wicket. Great shot.
signaled by umpire Muhammad Rehan. Muhammad Rehan, who is presiding at the club road end, and that is to score on to 46. This is going to be an expensive over. Already 15 runs have come off it. And Fahim Bukhari, he is straying in length and direction both. This one, oh my God, he failed to make any, maybe the current run rate is 12.0 and the asking rate is 7.6. Here comes Fahim, and this one to mid wicket for a single. That takes the score on to 47 at the end of 4 overs. 47. Current 11.75, asking 7.5. And current run rate is 11.75 and the asking rate is 7.63. Shake it up, Mitchell. Shake it up. Shake it up. And let's see what plan they have for the bowling from the governor's house. And is there a change? Muhammad Ali continues. This is his second or third over? Second over. Muhammad Ali will. And how many runs did he give in the first over? 7. Muhammad Ali has been relatively economical. He gave 7 runs in the first over. This is his second over. The field being adjusted. We now have a man on the fence here at long off. Or is it there? Here comes Muhammad Ali. This one was straying down the leg side and has been pulled for a lovely low flat 6 to mid wicket, and a good start for the IMI OMAR team. First ball 6 runs. You've got the Irfan has scored 25 runs of what? 30? 30 balls, 31 runs. With the help of 2 fours and 2 3 majestic sixes. Here he comes, and this one a better delivery, and Irfan Ali couldn't do too much about that one. He tapped it towards point. No runs, no damage done. And Muhammad Ali to Irfan. Here he comes. He ambles up to the wicket and delivered. This time again. String. Oh, wow. Totally missed the line of that one, and he's bowled. Signaled by the umpire, and that takes the second wicket of IMI OMAR is now down, and this is the 4th over, right? 4.3. 4th over, and the score is 4 after the end of 4.3 overs. IMI OMAR are 53 for the loss of 2 wickets. And Pakistan that's what he played. And the next batsman walking up to the center is Afsar Nawaz. He's played first class cricket, and I understand almost played for Pakistan, but he couldn't get it. And Afsar Nawaz walking to the center, and he will be facing he will be facing Muhammad Ali, who's bowling well. He's got how many wickets? 2. He's got the 2 wickets which have fallen, and he's pretty economical as well. He just kind of ambles, walks up to the stumps,
and he's been good at what he's doing. Left arm orthodox. The field again being adjusted, and one fielder coming to long off, while the second is at mid-wicket. Here comes Muhammad Ali. Good delivery, and Afsar Nawaz gently taps it back to the bowler. Muhammad Ali to Afsar Nawaz. There he walks up to the stumps. This one straying down the leg side, it's been swept to backward, square leg, 4 runs, signaled by the umpire. रेहान है वो तो रेहान तो उस तरफ है ये क्या नाम umpire Rashid Khan supervising the proceedings from the governor's house, and Muhammad Ali to Afsar Nawaz crouches. This one again outside, it's the wickets on the leg side, and taps it to cover for a single. 58 runs, 58 रन हुए 5 ओवरों के इख्तिताम पे. 11 runs came off this over of Muhammad Ali, but he got change. Now we have a bowling change from the Club Road end, and who do we have? Azizullah is coming into the attack. Azizullah, the field is being set, and this is the third left-arm spinner who's playing for IMI OMAR in this fourth match of the 31st Karachi Gymkhana Ramzan Cricket Festival being played for the OMAR Associates Cup, and the batsman is Afsar Nawaz, who, as a result of the single on the last ball, keeps the strike. Afsar Nawaz keeps the strike, and it's going to be Azizullah, another left-arm spinner. Let's see what he can do. Field being adjusted. It's 1, 2, 3, 4, 6 people on the offside, and let's see what he is going to do. We have one on the fence at long on. This one outside the off stump, and it's been tapped to mid-wicket for a single. Afsar Nawaz gets a single, and he goes on to 59. And the score goes on to 59 for 2 wickets, and this is a 5th over being bowled. And Azizullah, this one been signaled a wide by umpire Rehan. Yes. And it was way outside the off stump, because Azizullah had seen Irfan Ali move, and this one again, and nice shot. He's trying to cut him, but straight to there's a strong, there are 3 people behind the umpire on the offside, and it'll be difficult to pierce that. Again he tries it, but straight to the fielder, and they take a single, a cheeky single. Yes, good running. That takes the score on to 61. 61 for 2 wickets, and this is the 5th over being bowled. And Azizullah to Afsar Nawaz. Let's see what he does. This one pitched outside the off stump, but this has been driven. 4 runs. Great shot. Cut to the point boundary. Great shot by Afsar Nawaz. You can see the touch of class
in his strokes. He's a Swan again outside the off stump. It's been driven to long off for a single. Afsar Nawaz gets a single. And we have Pakistan international Mohammad Sami playing this match. And here we go, Azizullah. And this one is wrapped on the pad. Appeal for like before. Umpire Rehan unmoved. 66 and 6 hours. Okay. 66 in 6 overs. And I will now hand over the commentary to our very own Mr. Mirza Qamar Beg. Thank you, and let's have a great match, Mirza Qamar Beg. Next time. मियाँ शौकत साहब अभी हमारे बीच मियाँ शौकत साहब अंग्रेज़ी कमेंट्री से हमें लुत्फ़अंदोज़ कर रहे थे। शौकत साहब जब कमेंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है हम उमर कुरैशी के दौर में, सिमिलर टू उमर कुरैशी। और यहाँ अब तक 66 रन बना चुके हैं IMI उमर टॉस जीतकर दूसरी बारी ले रहे हैं। मौजूदा रन औसत 11.00 और रिक्वायर औसत जो है वो 7.36 है। इस बार बैट्समैन आसिफ हैं, ये गेंदबाज जो कमेंट्री बॉक्स की ओर से आसिफ शेख। और जॉगिंग ट्रैक पे हम देख रहे हैं जनाब जाम नफीस साहब को। और इस बार खेलना चाहते थे कवर की जानिब, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। और 4 रनों के साथ 74 रन। इस बार धीरे से खेले हैं, ऑफ साइड पे कवर की जानिब 1 रन के लिए बल्लेबाज। और 1 रन के साथ 75 रन, 2 विकेट खोकर। इस बार फिर से पॉइंट की जानिब खेलते हुए 1 रन लिया और इस 1 रन के साथ 76 रन, 76।
IMI उमर 169 रन का पीछा करते हुए 20-20 के इस मैच में। आसिफ फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, ओरिएंट की ओर से गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। इस बार गेंद अच्छी गेंद ब्लॉक होल में की, इस गेंद को धीरे से खेला है वापस बॉलर की जानिब। रन लेने का कोई मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों के लिए और इसी के साथ 7वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 7वें ओवर के इख्तिताम पर पैंतीसवां कराची जिमखाना रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल उमर एसोसिएट 2022 खेला जा रहा है यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर। आज का मैच खेला जा रहा है डेनम क्राफ्ट और IMI उमर के बीच। डेनम क्राफ्ट जो कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी और अब बारी ले रहे हैं, 169 रन का पीछा कर रहे हैं और अब तक 2 विकेट खो चुके हैं। इरफान अली खेल रहे हैं, 12 रन पर 8 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगाए 150 के स्ट्राइक रेट से। और असफर नवाज खेल रहे हैं 17 रन पर 10 गेंदों का सामना करके 3 चौकों की मदद से 170 का स्ट्राइक रेट है। इरफान अली सामना करेंगे और इस बार गेंद अच्छी गेंद फ़हीम की धीरे से खेला है उसे स्लिम मिड ऑफ की जानिब, जहां बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में आके खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आगा साबिर है गेंदबाज, बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, फार एंड की ओर से राउंड द विकेट गेंद करेंगे एम्पायर और विकेट के दरमियान से। इस बार लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को कट किया सीधा पॉइंट के फील्डर के पास, जहां रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आगा साबिर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे 5 ऑफ साइड पे। इसी फील्डिंग की सजावट के साथ फिर से अच्छी गेंद आगा साबिर की, लेग ब्रेक गेंद लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई उस गेंद को ध्यान के साथ स्पिन को देखते हुए जल्दी करना पड़ी थी। इस बार बल्लेबाज को खेला स्लिम डाउन की जानिब, जहां बॉलर ने फॉलो थ्रू में खुद ही फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। आगा की अगली गेंद इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन उतने ही अच्छे अंदाज में धीरे से खेलते ही पुश करते ही ऑफ साइड पे शॉर्ट कवर की तरफ 1 रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ इस बार गेंद बहुत अच्छी गेंद पूरी तरीके से चूके थे बल्लेबाज। एक उम्मीद से ज़रूर पैदा हुई थी, लेकिन वहाँ मौके जैसी कोई बात नहीं थी। 75 रन 2 विकेट खोकर 8वें ओवर का खेल हो रहा है। इस बार बहुत अच्छी गेंद आगा साबिर की, लेग ब्रेक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद टॉप स्पिन होती। इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद से चूके गेंद गई विकेट कीपर के पास और इसी के साथ 8वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 8वें ओवर के इख्तिताम पर 75 रन 2 विकेट खोकर IMI उमर 169 रन का पीछा करते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। आगा साबिर ने अपने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया है, काफ़ी किफ़ायती ओवर कहना पड़ेगा आगा साबिर का। सिर्फ 1 रन दिया अपने इस ओवर में आसिफ शेख, जबकि 2 ओवर में 25 रन दे चुके हैं।
मौजूदा रन औसत 9.38 और जो रिक्वायर रन रेट है वो 7.8। रिक्वायर रन रेट अब कुछ मजीद बढ़ता हुआ। अबे आसिफ शेख है यार। आसिफ शेख तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, और इस बार गेंद थोड़ी ओवर पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करते हुए पुल के अंदाज में खेले हैं डीप मिड राउंड की तरफ, जहां फील्डर मौजूद वहां रन भी मौजूद दोनों बल्लेबाजों के लिए। और इस बीच एक रन हटाने के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ 77 रन। आसिफ शेख गेंद करेंगे इरफान को, और ये सीधा एक आसान सा कैच यहाँ छोड़ दिया है। फील्डर थे गुलाम अली, और एक जिंदगी दी है वहाँ इरफान अली को। आसिफ शेख फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। अनलकी रहे, करीब करीब थे विकेट चटखाने के, लेकिन वहाँ एक आसान सा कैच गुलाम अली के हाथों से छूटा। इस बीच एक रन और आसानी के साथ हासिल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। इरफान अली खेल रहे हैं 15 रन पर 14 गेंदों का सामना किया है और 2 चौके लगाए हैं। अफसर नवाज जब 19 रन पर खेल रहे हैं, 14 गेंदों का सामना किया और 3 चौके लगाए 135 के स्ट्राइक रेट से। आसिफ शेख फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज इरफान अली को, जो कि अभी अभी एक जिंदगी ले चुके हैं और इस बार खेल दिया है पुल के अंदाज में। देखना पड़ेगा स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रशीद खान का इशारा। 4 रन और इन 4 रनों के साथ 83 रन, 83 लॉस ऑफ 2 विकेट कम। आसिफ शेख अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए तैयार, हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार मिडिल स्टंप पे पड़ी गेंद को ले लिया है। देखना पड़ेगा गेंद का उछाल कितना है और एम्पायर का इशारा। 6 रन। लॉन्ग ऑन के फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे, गेंद उड़ान भरती हुई 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों के साथ 89 रन 9 ओवर के अख्तिताम पर। मौजूदा रन औसत 9.89 और अब रिक्वायर रन रेट जो है वो 7.27 है। तारीफ करना पड़ेगी यहाँ अफसर नवाज और इरफान अली की बल्लेबाजी की। इरफान अली जो कि जारहाना रूप धारे हुए हैं, 25 रन की हैं, 16 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके और 1 छक्का लगाया है इरफान अली ने, जबकि अफसर नवाज खेल रहे हैं 19 रन पर 14 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से। आगा साबिर ने 1 ओवर किया है और 1 रन दिया है। अच्छा किफ़ायती ओवर था आगा साबिर का। आसिफ शेख जिन्होंने 3 ओवर में 39 रन दिए हैं, खासे महंगे साबित हुए हैं। 13.00 के औसत से ये रन दिए हैं आसिफ शेख ने। और वहाँ गेंदबाजी की जिम्मेदारियां फिर से आगा साबिर के हाथ में। आगा साबिर बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। गेंद करेंगे अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज
अफसर नवाज को। अफसर नवाज के लिए फील्डिंग की सजावट, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पे, 5 ऑफ साइड पे। ऑफ साइड पे डीप कवर लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, डीप मिड ऑफ भी लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए, कवर पॉइंट गली, यह है ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पे डीप लॉन्ग ऑन लगभग बाउंड्री लाइन को छूते हुए इस बीच ये गेंद कट किया है खूबसूरती के साथ, अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, खेल दिया उसे डीप कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, बिल्कुल कारपेट के सहारे 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट यहाँ बल्लेबाज का। अफसर नवाज है ये बल्लेबाज जिन्होंने खूबसूरत कट शॉट खेल के 4 हासिल किए। 23 रन पर पहुंचे अफसर 15 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से। आगा साबिर बाहिनी हाथ से राउंड द विकेट, इस बार फिर से ऑफ स्टंप पे पड़ी इस गेंद को खेल दिया है, उछाल गेंद में खासा था और लॉन्ग ऑफ के फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे, गेंद उड़ान बढ़ती हुई, अंपायर रेहान का इशारा 6 रन। काफी जहराना रूप धारा है यहाँ इस बार अफसर नवाज ने। आगा साबिर फिर किए गेंद पहले की निस्बत अच्छी गेंद, उसको इज्जत के साथ खेलते ही पॉइंट की जानिब। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज और 1 रन के साथ 93 रन, 2 विकेट खोकर अफसर नवाज पहुंचे 30 रन पर 17 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। इस बार ड्राइव किया है अगले कदम पे इरफान अली ने, जो ही गेंद को फ्लाइट गिरते देखा अपने कदमों का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया, ड्राइव किया उसे लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद वहां, रन भी मौजूद दोनों बल्लेबाजों के लिए। आगा साबिर बाहिनी हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज राउंड द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। इस बार ये उठता हुआ शॉट था लेकिन महफूज देखना पड़ेगा तब तक कि डीप कवर के फील्डर आके उसे फील्ड कर रहे हैं। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और 1 रन के साथ 101 रन IMI उमर 169 रन का पीछा करते हुए 20-20 के इस मैच में। इस बार इस गेंद को धीरे से कट करते हुए पॉइंट की जानिब, जो ही पॉइंट की फील्डर को दूर देखा, ये रन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ 103 रन 10वें ओवर के अख्ताम पर IMI उमर 169 रन का पीछा करते हुए यहाँ 20-20 के इस मैच में। अफसर नवाज खेल रहे हैं 31 रन पर 18 गेंदों का सामना करते हुए। इरफान अली खेल रहे हैं 27 रन पर, उन्होंने भी 18 गेंदों का सामना किया है। इरफान अली का स्ट्राइक रेट 150 जबकि अफसर नवाज का स्ट्राइक रेट है 172। इन दोनों की साझेदारी अब तक 50 रन की हो चुकी है। तीसरी विकेट की शराकत, तीसरी विकेट की साझेदारी 50 रन की हो चुकी है। अच्छी बारी ले रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज और अपने बल्लेबाजों को एक मुश्किलात से निकाला है। मौजूदा रन औसत 10.30 और अब जो औसत दरकार है वो 6.6। यहाँ बॉलिंग में तब्दीली हुई है। अजीजुल्ला हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने हैं पवेलियन की ओर से। अजीजुल्ला भी बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। जॉगिंग ट्रैक से हमारे सामने जनाब जाम नफीस साहब गुजरते हुए। जाम नफीस इंतहाई नाम के हिसाब से भी नफीस आदमी हैं और सेक्रेटरी जिम खाना है। बड़ी काविशें हैं जाम नफीस साहब की टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमेशा की तरह। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए जो ही देखा गेंदबाज ने गेंदबाजी में तब्दीली की और अजीजुल्ला फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार कट किया है फ्लैटेड गेंद पे लेकिन फील्डर मौजूद, रन लेने का कोई मौका नहीं। गली पॉइंट की फील्डर
ने फील्ड करके थ्रो की। अजीजुल्लाह अब तक 2 डॉट बॉल कर चुके हैं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह बाहिने हाथ से रॉन्ग विकेट गेन करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, फिर से बैकफुट पर जाके स्पिन के साथ ही खेला है पॉइंट की जानिब। फिर से कोई मौका नहीं है बल्लेबाजों के लिए रन लेने का, और एक और डॉट बॉल वहाँ अजीजुल्लाह की जानिब से। वेल बोल्ड अजीजुल्लाह। अजीजुल्लाह गेंद करेंगे इरफान अली को, और इस बार बैकफुट में जाके खेलना चाहते थे, फिर से कमान के साथ नहीं खेल पाए, फिर से डॉट बॉल खेल बैठे हैं बल्लेबाज। यहाँ तारीफ करना पड़ेगी अजीजुल्लाह की, जिस तरीके से बल्ले पे ताला लगाया है वहाँ इरफान अली के बल्ले पर। और इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल किया है, लेकिन देखना पड़ेगा तब तक कि डीप मिड विकेट से फील्डर आके फील्ड करें। मौका था बल्लेबाजों के लिए, मोइन खान थे ये फील्डर, फील्ड करके थ्रो करते। मौका था बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और उस 1 रन के साथ 104 रन। अजीजुल्लाह फिर से तैयार, बाहिने हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। ये गेंद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई इस गेंद को एम्पायर रशीद का इशारा वाइड बॉल का, और यहाँ एक और रन वाइड के रूप में यहाँ IMI की झोली में। अजीजुल्लाह खासी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अपनी लाइन से इस बार चूके और एक वाइड का रन दिया ज़रूर। अजीजुल्लाह ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती उस गेंद को ध्यान से खेला, अगेंस्ट द स्पिन खेलते हुए ऑन साइड पे मिड विकेट की जानिब, जहां अजीजुल्लाह ने खुद जाके फील्ड की। मौका था रन लेने का बल्लेबाजों के लिए, 1 रन पूरा किया दोनों ने, और इसी के साथ 105 रन, 106 रन 11वें ओवर के अख्तिताम पर 106 रन। और जब मौजूदा रन औसत है 9.64, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब 7.00 है। और अब इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान साझेदारी तीसरी विकेट की 53 रन की हो चुकी है। 39 गेंदों पे 53 रन बनाए, और एक बड़ी आस है अपनी बल्लेबाजों के लिए, जिस चीज़ की ज़रूरत थी बल्लेबाजों को। और इस बीच वाइड बॉल, एम्पायर का इशारा, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ये गेंद बाहर की तरफ जा रही थी। आगा साबिर फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, बाहिने हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आती हुई इस गेंद को धीरे से स्पिन के साथ ही खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े ऑफ स्टंप पे। 1 रन के लिए, और इस 1 रन के साथ 107 रन, 108 रन। आगा साबिर की गेंद, जो ही बल्लेबाज को क्रीज से निकलते देखा, गेंद में तब्दीली ज़रूर की थी, लेकिन बहुत ही चालाकी से बल्लेबाज ने बल्ले के बीचों बीच लिया, और बल्ले के बीच का जो गूदा है वो दिखाया है डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। एम्पायर का इशारा 6 रन। काफ़ी दिल वाला और काफ़ी हिम्मत वाला शॉट कहना पड़ेगा जो खेला है इस बार इरफान अली ने। और इन 6 रनों के साथ इरफान अली पहुंचे 34 रन पर, 24 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। 141 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं इरफान अली, और इस बार फिर से स्वीप के अंदाज में खेले। देखना पड़ेगा तब तक कि डीप स्क्वायर लेके फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए 1 रन का, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ 114 रन। बहुत लेट कर रहा है नहीं आ भी। उस बीच एक डॉट बॉल, अच्छी गेंद कहना पड़ेगा, जो बल्लेबाज को क्रीज से बाहर आते देखा, गेंदबाजी में तब्दीली की और ब्लॉक होल में गेंद को किया, ताला से लगाया है उनके बल्ले पर। अफसर नवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार गेंद को खेले हैं। उठता हुआ शॉट था, लेकिन फील्डर की पहुंच से बहुत दूर, तब तक कि फील्ड करते
थ्रो करते ही 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। मोइन खान थे ये डीप कवर पे खड़े फील्डर। अफसर नवाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। देखना पड़ेगा, गेंद में उड़ान इतनी ज़्यादा है कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर हसरत भरी निगाहों से देखते ही रहे और गेंद उड़ान भरती हुई बाउंड्री के ऊपर से। एम्पायर रेहान का इशारा, 6 रन। और इन 6 रनों के साथ 12वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 12वें ओवर के इख्तिताम पर 122 रन, 2 विकेट खोकर, और अब साझेदारी पहुंच गई है 69 रन पर 45 गेंदों पे। तीसरे विकेट की शराकत, तीसरे विकेट की साझेदारी, जिसने बहुत हद तक पीछे कर दिया है यहाँ डेनम क्राफ्ट के गेंदबाजों को। शुरुआत में मैच पे थोड़ी गिरफ्त जरूर हासिल की थी। और अब मौजूदा रन औसत 10.17, और जो औसत दरकार है वो 5.88 है। यहाँ तारीफ करना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की, इरफान अली और अफसर नवाज, जो कि अच्छी बारी ले रहे हैं तीसरी विकेट की शराकत में। और इस बार इस गेंद को लपेटते हुए अंदाज में खेले हैं ऑन साइड पे डीप मिड ऑन की जानिब। तब तक के फील्डर फील्ड करें, मौका है बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, और इस 1 रन के साथ 122 रन। अजीजुल्लाह बाईं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज बाईं हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे, अपनी फील्डिंग की सजावट में तब्दीली करते हुए। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 4 ऑफ साइड पे। इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरी तरीके से झुके, और ये वाइड का इशारा भी एम्पायर की जानिब से, लेकिन बहुत ही अच्छी वहाँ विकेट कीपर की चाबुक दस्ती कहना पड़ेगा, और ये झटका दिया है विकेट कीपर ने। यूं ही क्रीज से बाहर आ गए थे, कोई मौका नहीं था वापस लौटने का। विकेट कीपर ने पलक झपकते ही उनकी बैल्स उड़ा दी, और ये तीसरा झटका। आउट होने वाले बल्लेबाज इरफान अली, जो कि अच्छी बारी ले रहे थे, 41 रन का सामना किया। 26 गेंदों पे 3 चौके और 3 छक्के लगाए इरफान अली ने। नए जाने वाले बल्लेबाज फर्रुख रिजवी, और इस मौके पे विकेट हासिल करना एक उम्मीद अफ़ज़ा बात है डेनिम क्राफ्ट के लिए। हमारे सामने जॉगिंग ट्रैक पे लेजेंड मोइन खान, उनके साथ इमरान अंसारी। मोइन खान पाकिस्तान का एक बड़ा नाम। पैंतीसवां कराची जिमखाना उमर एसोसिएट रमज़ान क्रिकेट फेस्टिवल 2022 का ये मैच खेला जा रहा है यहाँ कराची जिमखाना के ग्रीन कारपेट पर। आज का मैच खेला जा रहा है, ये मैच नंबर 4 है जो खेला जा रहा है डेनिम क्राफ्ट और IMI उमर के बीच। IMI 169 रन का पीछा कर रहे हैं, और इस पीछा करने में 124 रन अब तक बना चुके हैं, 3 विकेट खो चुके हैं। 45 रन चाहिए हैं 47 गेंदों पर। अजीजुल्लाह, गेंद बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से चूके। एक उम्मीद से पैदा हुई थी अजीजुल्लाह के लिए, और ये देखना पड़ेगा एक और उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन क्रीज में मौजूद हैं बल्लेबाज। अजीजुल्लाह ने अब तक जो 2 गेंदें की है काफ़ी किफ़ायती गेंदें की हैं, एक गेंद पे विकेट भी चटकाई है। इरफान अली जैसे बल्लेबाज जो कि अच्छी बारी ले रहे थे, उनको आउट करके पवेलियन में भेजा है अजीजुल्लाह ने। अजीजुल्लाह बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को, और ये लेग ब्रेक गेंद
ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई उस गेंद को अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करते हुए विद द स्पिन खेले डीप मिड ऑफ की तरफ, जहां फील्डर मौजूद वहां रन भी मौजूद दोनों बल्लेबाजों के लिए। अजीजुल्लाह बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज गेंद करेंगे अफसर को, और इस बार लेग स्पिन गेंद, इसको पूरी तरीके से स्पिन होते देखा और फिर से खेल दिया है विद द स्पिन डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जब तक कि डीप मिड ऑफ पे फील्डर आके उसे डीप फील्ड करते 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अजीजुल्लाह फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार पहले गेंदबाज अच्छी गेंद खेलते ही दौड़ पड़े हैं, विकेटों के दरमियान अच्छे तालमेल की दौड़ के आना पड़ेगी। पुश करते ही जो ही पॉइंट के फील्डर को सुस्ताते देखा, ये रन चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ 128 रन अजीजुल्लाह। और इस बार फिर से कट किया है विद द स्पिन, वहाँ थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, पॉइंट के फील्डर से गेंद गई डीप कवर की जानिब, तब तक कि डीप कवर से फील्डर फील्ड करते हैं। मौका था बल्लेबाजों के लिए 2 रन का, 2 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ 130 रन और अब 39 रन चाहिए हैं 42 गेंदों पर। मौजूदा रन औसत 10.00 और जब जो रन रेट दरकार है वो 5.57। और वहाँ गालिबन गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालेंगे फ़हीम। फ़हीम सीनियर बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज। फ़हीम सीनियर भी पाकिस्तानी घरेलू क्रिकेट का जाना माना नाम। इस बार ये गेंद लेग ब्रेक गेंद थी, उठता हुआ शॉट था लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर और बाउंड्री की फील्डर की पहुंच से भी दूर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर रेहान का इशारा 4 रन। अपिच शॉट था लेकिन मौके जैसी कोई बात नहीं थी। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए अफसर नवाज पहुंचे 42 रन पर। फ़हीम की इस गेंद को स्वीप किया है खूबसूरती के साथ, कहना पड़ेगा बहुत ही शानदार पिक किया। अब अपना एक कदम ज़मीन पे टिकाते हुए, घुटना ज़मीन पे टिकाते हुए खेले हैं, स्वीप किया खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए स्क्वायर लेग पर। वेल प्लेड अफसर नवाज 46 रन पर मौजूद और अब सिर्फ 4 रन की दूरी पर अफसर अपनी शानदार निस सेंचुरी से फ़हीम सीनियर बाएं हाथ से राउंड द विकेट। और इस बार ये गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, उसको अगले कदम पे ड्राइव किया लेकिन सीधा कवर के फील्डर के पास रन लेने का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। अफसर खेल रहे हैं 46 रन पर और सिर्फ 4 रन की दूरी पर अपनी शानदार निस सेंचुरी से। और इस बार जगह बनाते हुए कट किया है, इस बार डीप कवर की जानिब, रन मौजूद, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इस 1 रन के साथ 139 रन 3 विकेट खोकर IMI उमर 169 रन का पीछा करते हुए। फ़हीम की ये गेंद पहले की निस्बत थोड़ी सी तब्दील थी, उस तब्दीली को पूरी तरीके से पहचाना और खेले ऑफ साइड पे कवर की जानिब, रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। फ़हीम बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंद करेंगे, दाहिने हाथ के बल्लेबाज को इस बार बहुत अच्छी गेंद, उसको उतनी इज्जत बख्शे हुए धीरे से ऑफ साइड पे खेलते ही रन के लिए दौड़ पड़े। तब तक इसी के साथ 14वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 14वें ओवर के इख्तिताम पर 140 रन 143 completion of 14 over chasing the target 169। IMI उमर मौजूदा रन औसत 10.00 और अब रिक्वायर औसत जो है वो खासा गिरता हुआ
4.83 और अभी सिर्फ 3 खिलाड़ी पवेलियन में गए हैं, 7 खिलाड़ी बाकी हैं और एक आसान सा हदफ बज़ाहिर महसूस होता है, लेकिन क्रिकेट में आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सी टीम कब कम बैक कर ले। यहाँ पवेलियन की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली नजर आ रही है। मोहम्मद अली आए हैं। मोहम्मद अली बाईं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज हैं। अब तक 2 ओवर कर चुके हैं, 18 रन दे चुके हैं और 2 विकेट हासिल किए हैं मोहम्मद अली ने। अब तक के वाहिद कामयाब बॉलर मोहम्मद अली बाईं हाथ से रॉन्ग द विकेट गेन करेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज को फर्रुख रिजवी हैं, ये बल्लेबाज ड्राइव किया उन्होंने पहली गेंद को डीप मिड ऑफ की जानिब, जहां मोइन खान ने फील्ड किया। रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के लिए और इस 1 रन के साथ 141 रन। अली की अगली गेंद इस बार फिर से बैकफुट पर जाके विद द स्पिन खेले हैं डीप मिड ऑफ की जानिब, जहां फील्डर से मिस फील्ड हुई, उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अली फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे और इस बार गेंद पहले की निस्बत अच्छी गेंद, उसको उतनी अच्छे अंदाज में कट करते ही शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब खेले 1 रन के लिए। अफसर नवाज पहुंचे 48 रन पर। 48 रन, अब 2 रन की दूरी पे हैं अफसर नवाज अपनी शानदार निफ सेंचुरी से। अली बाहिने हाथ से रॉन्ग द विकेट, इस बारी गेंद अच्छी गेंद, उसको उतनी ही अच्छे अंदाज में विद द स्पिन खेलते हुए मिड ऑफ की जानिब 1 रन हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने और अब 49 रन पर पहुंच गए हैं अफसर नवाज, सिर्फ 1 रन की दूरी पे अपनी शानदार इस सेंचुरी से। 48 रन। अफसर नवाज और इस बार खेल दिया है, देखना पड़ेगा तब तक कि डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आके फील्ड करे। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया और अब सिर्फ 1 रन की दूरी पर अफसर नवाज अपनी शानदार निस सेंचुरी से बहुत ही अच्छा सहारा दिया है अपने बल्लेबाजों को। 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अफसर नवाज ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से अफसर नवाज कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं। फर्रुख रिजवी सामना करेंगे बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज अली का और लपेटते हुए अंदाज से खेला है अगेंस्ट द स्पिन लेग ब्रेक गेंद को डीप मिड विकेट मिड ऑन की तरफ, जब तक कि फील्डर फील्ड करें मौका है बल्लेबाजों के लिए। और इसी के साथ 15वें ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। 15वें ओवर के इख्तिताम पर 146 रन, 146, लॉस ऑफ 3 विकेट। अब 23 रन दरकार हैं 30 गेंदों पे। बज़ाहिर आसान सा हदफ ज़रूर है, लेकिन क्रिकेट में आखिर तक कुछ नहीं कहा जा सकता कब कम बैक कर ले। वहाँ फार एंड की ओर से गेंदबाजी में तब्दीली। अजीजुल्ला आए हैं गेंदबाजी की जिम्मेदारियां संभालने। फ़हीम बुखारी जिन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए हैं, खासे महंगे साबित हुए। फ़हीम बुखारी 10.06 की औसत से गेंदबाजी की फ़हीम बुखारी ने।
अपडेट नहीं हुआ, अपडेट दीजिए। जाने बोलो, क्या नाम बताया था बोलो तो? अजीजुल्ला। अजीजुल्ला फॉरेन की ओर से बाएं हाथ से लेग ब्रेक गेंदबाज अजीजुल्ला, ये गेंद लेग ब्रेक गेंद लेग स्टंप ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती है। उस गेंद को, गेंद अपने आप को गेंद की लाइन से अलग किया है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाए, कट किया है उसे डीप कवर की जानिब, तब तक कि फील्डर आके फील्ड करने मौका था बल्लेबाजों के लिए। 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस बार उल्टे बल्ले से खेले हैं, देखना पड़ेगा। यहाँ कोशिश ज़रूर की थी फील्डर ने, गेंद उनके हाथ से लगी थी और ये मौके जैसी बात कहेंगे। अगर फील्डर के हाथ से गेंद लग जाए तो वो मौका ही होता है, ज़िंदगी होती है बल्लेबाज के लिए। अजीजुल्ला फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे अफसर नवाज को, जो कि 1 रन की दूरी पर फर्रुख रिजवी हैं ये, तो उसने 50 कर दिए और 50 रन मुकम्मिल कर चुके हैं अफसर नवाज। अफसर नवाज खेल रहे हैं 50 रन पर 32 गेंदों का सामना किया। वेल प्लेड अफसर नवाज, 50 रन 32 गेंदों पे मुकम्मिल किए अफसर नवाज ने। 6 चौके और 1 छक्का लगाया है। और इस बार लपेटते हुए अंदाज में खेले हैं, घुटना टेकते हुए डीप मिड विकेट की तरफ। वहाँ रन मौजूद, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ 149 रन, 149। अजीजुल्ला बाएं हाथ के लेग ब्रेक गेंदबाज, गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अफसर नवाज, जो कि 50 रन पर खेल रहे हैं। और इस बार कट किया है खूबसूरती के साथ। फर्रुख रिजवी थे ये बल्लेबाज। अब हुआ लेट क्यों हो रहा है? तो इतने करीब। और एक और डॉट बॉल वहाँ अजीजुल्ला की जानिब से। अजीजुल्ला ने 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट हासिल किया। अपने कोटे के 4 ओवर मुकम्मिल किए हैं अजीजुल्ला ने। 4 ओवर 23 रन 1 विकेट और 6.00 के औसत से गेंदबाजी की अजीजुल्ला ने। 16वें ओवर के अख्ताम पर 150 रन और 19 रन दरकार हैं। 24 गेंदों पर 19 रन। अली फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अफसर को। और अफसर ने स्वीप के अंदाज में खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। अली बाहिने हाथ से राउंड द विकेट। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 3 ऑन साइड पे। इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मोइन खान थे ये फील्डर, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था। एफर्ट बहुत की थी, अच्छी एफर्ट की थी मोइन खान ने, लेकिन गेंद की रफ्तार कदर तेज थी। और इन 4 रनों के साथ 168 रन, 155 रन, 155। अगली गेंद, इस बार गेंद अच्छी गेंद, लेग ब्रेक गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ जाती है। इस गेंद को स्पिन के साथ ही खेलते ही दौड़ पड़े। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज कवर की जानिब। और 1 रन के साथ 156 रन, 156। अली फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार
जो ही बल्लेबाज को कदमों का इस्तेमाल करते देखा, गेंदबाजी में तब्दीली की, खींचा थोड़ा सा गेंद को, और जहां एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे बल्लेबाज, एक ताला सा लगा उनके बल्ले पर, और डॉट बॉल के रूप में ये बॉल अली फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर गेंद करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज को। और इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई उस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, चूंकि फिर से एक डॉट बॉल वहां अली की जानिब से। मोहम्मद अली फिर से तैयार, अपने ओवर की 5वीं गेंद कर रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, इसको खेल दिया है, देखना पड़ेगा। गेंद, एम्पायर का इशारा 6 रन, और इन 6 रनों के साथ 162 रन 17वें ओवर के अख्तिताम पर। और अब 13 रन दरकार हैं। कितने रन? 7 रन दरकार हैं, 18 गेंदों पे 7 रन। यहाँ तारीफ करना पड़ेगी अफसर नवाज की बल्लेबाजी की, जिस तरीके से बल्ले को कैरी किया है, जिस तरीके से अपनी बल्लेबाजी को लेके चले हैं। 58 रन पर खेल रहे हैं, 37 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और 2 छक्के लगाए। अफसर नवाज ने 156 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। अफसर नवाज ने, वेल प्लेड अफसर नवाज। फ़हीम बुखारी अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। अब तक खासे महंगे रहे हैं फ़हीम बुखारी, 10.06 की औसत से गेंद की हैं फ़हीम बुखारी ने। इस बार टॉप स्पिन गेंद, पहले ही से कमिट हो गए थे, बैकफुटर चले गए थे, गेंद में उछाल पैदा हुआ, गेंद गई विकेट कीपर के पास। फ़हीम बुखारी, और इस बार फिर अच्छी गेंद फ़हीम बुखारी की, खेलना चाहते थे, देखना पड़ेगा, एम्पायर का इशारा। विकेट कीपर चूके, और ये गालिबन बल्ले के किनारे से लगी थी, और ये 2 रन बल्लेबाज की झोली में। फर्रुख रिजवी थे ये बल्लेबाज। फ़हीम बुखारी फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, और इस बार अगले कदम पे ड्राइव किया है आसानी के साथ, देखना पड़ेगा तब तक कि डीप मिड ऑफ से फील्डर आके फील्ड करें। मौका है बल्लेबाजों के लिए, 1 रन का 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ 163 रन, और वहाँ एक और डॉट बॉल फ़हीम बुखारी की जानिब से। फ़हीम बुखारी अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, अब तक 33 रन दे चुके हैं। और इस बार देखना पड़ेगा, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, गेंद उड़ान भरती हुई डीप मिड ऑन की मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए खूबसूरत शॉट, और खासे महंगे साबित हुए हैं फ़हीम बुखारी। 3.5 ओवर में फ़हीम बुखारी ने 40 रन दिए हैं, और इसी के साथ ये फतह समेटी है अपने नाम। यहाँ IMI उमर और अफसर नवाज, जिन्होंने अच्छी बारी खेली, 59 रन किए हैं। अफसर नवाज ने 38 गेंदें, 6 चौके और 2 चौके बनाए। 155 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं अफसर नवाज।
बल्लेबाजी का हम देखें यहाँ 31 रन इरफान मुश्ताक ने किए थे, 15 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के लगा के, जबकि इरफान अली ने 41 रन किए, 26 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के लगाए 157 के स्ट्राइक रेट से, जबकि इरफान मुश्ताक खेले थे 206 के स्ट्राइक रेट से। और अफसर नवाज जिन्होंने 59 रन बनाए, 38 गेंदों पे 6 चौके और 2 छक्के 155 के औसत से खेले। फर्रुख रिजवी 22 रन 19 गेंदे, 1 छक्का और 1 चौका लगाया 115 के स्ट्राइक रेट से। बॉलिंग एनालिसिस देखे जाएं तो यहाँ आसिफ शेख ने 3 ओवर में 39 रन दिए 13 के स्ट्राइक रेट से। फ़हीम बुखारी ने 3.5 ओवर किए 40 रन दिए हैं और 10.43 के औसत से फ़हीम बुखारी ने गेंदबाजी की है। आगा साबिर ने 3 ओवर में 31 रन, अजीज़ुल्लाह ने 4 ओवर में 23 रन। एक खिलाड़ी और सबसे किफ़ायती गेंदबाज अजीज़ुल्लाह रहे हैं जिन्होंने 5.75 के औसत से गेंदबाजी की है। इसी के साथ हम आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। लगता है हाँ दोस्त, Team members of Denim Craft and IMI please come forward for the presentation. People, could please join us on the podium. Thank you. Rahul. Hello and welcome from the 35th Karachi Gymkhana OMAR Association Ramzan Cricket Festival 2022. Today the match is played between Denim Craft and IMI OMAR.
A wonderful comeback by Denim Craft after losing 4 wickets in the power play. They managed 168, but in the end, IMI got the better of them and won the game by 7 wickets with 13 balls to spare. Big hand for IMI. I would like to introduce our presentation party for today. We have with us the former captain of Pakistan cricket team, Mr. Moin Khan, with us. We have our chief guest for today, Mr. Mohammad Hussain, who is captain Karachi Gymkhana cricket team, and Syed Rafiq of the first class cricketer and also part of the Karachi Gymkhana cricket team. So we had some wonderful performances for today. Omar Masood batted well for his 40 straight, changed the game for Denim Craft, gave them hope. Irfan Ali batted really well for 41, but in the end, Afsar Nawaz for his brilliant unbeaten 59. Man of the match for today. Cash award of rupees 2,000 from Perception courtesy Mr. Madhur Hussain. Cash award rupees 2,000 from Toyota Central Motors courtesy Shahzad Salim Godil. And gift hampers from Dayfresh, Angeti and Candyland, plus a 3-piece ladies suit courtesy Eddie Zohair. अगर मैंने अगर भी आए हम बात भी करें थोड़ी आपको पहले तो जी वेरी वेल प्लेड जब 168 कर गए थे तो टफ हो गया था लेकिन आप लोगों ने शुरू से ही मौके नहीं दिया किसी को हमारे बैट्समैन कोच की सर कोच करके रनरेट को खत्म कर दिया तो मैं यही इरफान की लखाने भी पिछले एक आध रनरेट का मैच करके खत्म कर दिया आगे और टफ मैचेज आ रहे हैं कैसे देखें टूर्नामेंट को और क्या कहेंगे एनवायरमेंट में मैंने कहा कि हमारे पास कभी तो नहीं गए क्योंकि जब से 90 से दे रहा हूँ मज़ा आता है Yeah, all the best and very well played. In the end, I would request Mr. Moin Khan, please, if you can give a souvenir to our chief guest for the day, to Mohammad Hussain. And that's all for today. Thank you everyone for joining us. And tomorrow, the match will be played between Denim Craft and Fact Date. Engineering will join you tomorrow. Until then, take care of yourselves.